Hello friends, this is Rahul Singh. So today we will discuss some more SOC Analyst interview questions. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से. So इन पिछले वीडियो में 11 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से. So the question is what is encoding, encryption, hashing and obfuscation. ओके. सो ये इनकोडिंग क्या है, इनक्रिप्शन क्या है, हैशिंग क्या है. सो देखते हैं. सो इनकोडिंग encoding, the purpose of encoding is to transform data so that it can be easily and properly consumed by different types of systems. Okay, so इसका main purpose ये होता है encoding का, to transform data in one format to other format. Okay, so that the other system can understand the data format and can easily consume and process. Okay, जैसे for example अगर हम आपके पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी. सिस्टम ए फॉर्मेट ए एक फॉर्मेट एक्स फॉर्मेट में डेटा जनरेट करता है और सिस्टम बी को वो एक्स फॉर्मेट का डेटा समझ नहीं आता. ओके, सिस्टम बी को सिस्टम वाई फॉर्मेट में डेटा समझ में आता है. तो encoding do what? It converts the x format of data into the y format so that system b can understand. In the same way, system b generate data in Y format. Okay, the system is not able to understand. Again, the same data has to be encoded or transformed in the format in which system A can understand. Okay, like let me explain you in more detail. So there is a system A. Okay, system A. Now system B. ठीक है, तो सिस्टम ए. ओके, सिस्टम ए एक्स. नाउ सिस्टम बी वाई. तो सिस्टम ए एक्स फॉर्मेट में डेटा जनरेट करेगा और सिस्टम बी को भेजेगा. बट सिस्टम बी को एक्स फॉर्मेट समझ नहीं आता है. तो वी विल यूज इनकोडिंग वेयर द एक्स फॉर्मेट ऑफ डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इन वाई फॉर्मेट so that system B can easily consume and process the data. In the same way, system B generate data in Y format and it will send to system A, but again the system A will not able to understand the Y format. तो उसके लिए फिर से हमें इनकोडिंग यूज करना पड़ेगा टू ट्रांसफॉर्म डेटा इन एक्स फॉर्मेट ताकि सिस्टम में उसे समझ सके इजिली. सो हमारा पर्पस है इनकोडिंग का टू ट्रांसफॉर्म डेटा इन वन फॉर्मेट टू अदर फॉर्मेट so that other system can understand. So it is not used for any kind of security or encryption. Okay, so the purpose of encoding is to just transform data. So some of the example of encoding is like ASCII key, URI encoding, base64, Unicode. So these are the example of encoding. So now encryption. What is encryption? So the encryption is the process of encrypting data. Plain text data has been encrypted so that only intended person, those have decryption key, can able to see that data. Okay, the purpose of encryption is to transform data in order to keep it secret from other. Okay, only intended person, जिस पर्सन को ज़रूरत है, जो पर्सन ऑथराइज्ड है वही डेटा को देख सके, उसके पास डिक्रिप्शन की हो. सो द हियर encryption is used for security purpose. Okay, so there are multiple algorithm used for encryption like AES, 3DES, RSA. Okay, so encryption is used to encrypt the data. Okay, now hashing. Why we use hash? So hashing serves the purpose of ensuring integrity. Okay, आप जो भी डेटा ट्रांस सेंड कर रहे हैं वो डेटा प्योर है, किसी ने उसको छेड़छाड़ तो नहीं किया. इस चीज़ को चेक करने के लिए हैशिंग यूज़ करते हैं. दिस चेक्स द इंटेग्रिटी ऑफ डेटा. ओके, हाउ इट इज़ गोइंग टू चेक? बिकॉज आप एक फ़ाइल सेंड कर रहे हो, ठीक है, उस फाइल
का जब हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट सम पर्टिकुलर फिक्स्ड हैश वैल्यू, है ना, फिक्स। ओके, अगर आप उस फाइल में थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे और उसका दोबारा हैश निकालोगे यू विल गेट द डिफरेंट हैश। सो इससे दोनों प्रीवियसली पहले वाले फाइल का हैश जो जहाँ जिसने सेंडर ने भेजा है और रिसीवर को जो रिसीव हुआ है फाइल उसका हैश अगर दोनों का मैच नहीं होता है तो वी कैन से द डेटा हैज़ बीन टैम्पर्ड, किसी ने चेंज किया है। सो हैशिंग यूज़ करते हैं टू चेक इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल hashing algorithm is there like MD5, SHA3, so these are the hashing algorithm we can use. Now fourth one is obfuscation. Okay, the purpose of obfuscation is to make something harder to understand. Okay, usually for the purpose of making it more difficult to attack or copy. One common use of obfuscation is of source code so that it is harder to replicate a given product if it reverse engineered. Okay, तो इन सिंपल लैंग्वेज ऑब्फुस्केशन ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना देना, ठीक है, कि ताकि दूसरे लोगों को समझना है, नॉर्मल लोगों को समझना है। अगर कोई एक डेवलपर है उसने अपना कोड डेवलप किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो वो उस अपने कोड को सम ऑब्फुस्केशन मेथड यूज़ करके उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि कोई उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करे, उस कोड को ब्रेकआउट करे और उसको अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करे, कॉपी करने की कोशिश करे, तो ये ऑब्फुस्केशन उसको डिफ़िकल्ट बना देता है, ठीक है, कि आप किसी के ऑलरेडी बनाए हुए सॉफ्टवेयर को कॉपी ना कर सके, उसके कोड्स को समझ ना सके। सो दिस इज obfuscation used for that purpose only. Okay, like JavaScript obfuscator, ProGuard, so there are many obfuscator is available. Okay, so 13th question is what is difference between SSL and TLS? Okay, so both are the encryption algorithm. Okay, both are the encryption protocol, sorry। ओके, सो एसएसएल भी एक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है और टीएलएस भी इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, ठीक है, बट द डिफरेंस इज एसएसएल इज ओल्डर एंड टीएलएस इज लेटेस्ट वर्जन। ओके, सो एसएसएल वर्जन 3.0, ओके, इसके बाद जो भी प्रोटोकॉल आए हैं लाइक एसएसएल 3.1, हमारे पास इसका नाम चेंज करके टीएलएस टीएलएस 1.1 कर दिया गया है। सो बिफोर 3.0 हम एसएसएल बोलते थे, अब 3.1 से हम उसे टीएलएस बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एसएसएल एंड टीएलएस इन टर्म्स ऑफ just in if we compare versions, but there are few enhancements made in TLS. TLS is more secure. SSL SSL में बहुत सारे वल्नरेबिलिटी थे जिसको अटैकर इजीली इसको क्रैक कर सकता था, लाइक पूडल अटैक, ड्रोन, हर्ट ब्लीड वल्नरेबिलिटी, बहुत सारे वल्नरेबिलिटी थे एसएसएल में जिसको इजीली इसको इसके इंक्रिप्शन को क्रैक किया जा सकता है। तो टीएलएस उस सारे वल्नरेबिलिटी को पैच करके एनहांस करके वो टीएलएस बना जिसकी सिक्योरिटी ज़्यादा है। सो टीएलएस इज मोर सिक्योर देन एसएसएल, so we can say TLS is the enhanced version of SSL. So this is the basic difference. Okay, now the 14th question is what is cross-site scripting and its prevention? Cross-site scripting क्या है, XSS attack, और उसको कैसे prevent कर सकते हैं? So the cross-site scripting attack are a type of injection attack in which a malicious script are injected into in a web application or web page, okay, website. So XSS attack occurs when an attacker uses a web application to send malicious code, generally in the form of browser side script, to a different end user, and flows that allows this attack to succeed are quite widespread.
and occur anywhere in web application, uses input from a user within output it generate without validating or encoding it. So attacker can use accesses to send malicious script to unsuspecting user. The end user browser has no way to know that a script should not be trusted and will execute the script because it thinks that a script came from trusted source, and the malicious script can be accessed any cookies, session tokens or other sensitive information retained by the browser and used with that site. This script can even rewrite that content of the HTML page. Okay, so basically क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि अटैकर क्या करता है, जैसे कोई एक वेबसाइट है, आप मान लो फेसबुक का वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आप यूज़र फोटो अपलोड करता है, पोस्ट डालता है, कमेंट डालता है, ठीक है, लेकिन अटैकर ने किसी कमेंट के जगह पे किसी वेब एप्लीकेशन में एक मलिशियस क्लाइंट साइड कोड मीन्स वो कोड, वो स्क्रिप्ट जो हमारे ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, वो आपके ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होगा, आपके सिस्टम पे, आपके क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होगा, उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो स्क्रिप्ट जो वेब एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट होता है, दैट इज दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन वेब सेल्स। ओके, सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट हियर, तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन में इंजेक्ट कर देगा, और जब भी कोई यूज़र उस पेज को एक्सेस करेगा तो वो स्क्रिप्ट जो भी अटैकर ने जो स्क्रिप्ट जहाँ पे उसने इंजेक्ट कर रखा है, और जो भी ब्राउज़र उसको एक्सेस करेगा उसके क्लाइंट्स वो यूज़र के ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा। और वो स्क्रिप्ट में भी जावा स्क्रिप्ट, बीबीएस स्क्रिप्ट, दिस आर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। और जब भी एग्जीक्यूट होगा यूज़र के ब्राउज़र में जो भी डेटा स्टोर है उसको एक्सेस कर सकता है, रीराइट कर सकता है, लाइक स्टोर्ड पासवर्ड, दे कैन मैनिपुलेट कुकीज़, एचटीएमएल कोड्स, सो बहुत कुछ कर सकता है वो दूसरा बैकडोर या अदर मालवेयर को भी डाउनलोड कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट इज हैज़ बीन इंजेक्टेड इन योर ब्राउज़र। तो बेसिकली ये होता है, इसमें अटैकर कुछ मलिशियस स्क्रिप्ट वेबसाइट पे डालता है पहले, और जब भी कोई यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस करता है, उस पेज को एक्सेस करता है, वो स्क्रिप्ट यूज़र के ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, देन वो स्क्रिप्ट जैसे डिज़ाइन किया गया है वो अपना काम करेगा, जैसे आपका कुकीज़ है, आप जो भी स्टोर पासवर्ड है, यूआरएल्स है, जो भी है वो चोरी कर सकता है या एक्सफिल्ट्रेट कर सकता है। नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, फर्स्ट इज stored accesses. Okay, so let me write, the first is stored accesses. Okay, जिसमें अटैकर परमानेंटली कोड को वेबसाइट पे स्टोर कर देता है, लाइक जैसे कि किसी कमेंट, जहाँ कमेंट डालते हैं किसी वेबसाइट में, अगर कमेंट डालने का ऑप्शन है तो वहाँ पे कमेंट की जगह पे वो एक जावा स्क्रिप्ट डाल दिया है, ठीक है, वो परमानेंटली स्टोर्ड है, जितने भी यूज़र उस कमेंट को एक्सेस करेंगे, उस पेज को एक्सेस करेंगे, हर एक यूज़र के पास वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज कॉल्ड stored accesses, okay, where the input is script is permanently stored on the web application. Now this second is reflected accesses. In reflected accesses, when user, so in when reflected access occurs when user input immediately returned by web application in an error message, search result or any other response that includes some or all input provided by the user as a part of request without browser
browser and without permanently storing the user provided data. In some cases, the user provided data may never leave the browser. Okay, so basically here the attacker immediately instantly provide you the data, you know, in the form of URL. Some crafted URL will be sent by the attacker. Now once you click on the URL, that client side code that will be executed on your browser. So this script in reflected access, the attacker script is not stored in the web applications, so it is immediately given by the attacker to you in the form of crafted URL. जहाँ आपके पास एक URL आएगा, जब भी आप उस URL को क्लिक करोगे वो वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा. नाउ तीसरा है डॉम बेस्ड. सॉक एनालिस्ट लेवल 1 के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज this is more related to, you know, uh, those who are in the website development can understand in a better way what is DOM. So device object module. Okay, so इसमें क्या होता है कि एक DOM based accesses is a form of accesses where the entire tainted data flow from source to sink takes place in the form in the browser. Okay, the source of the data is in the DOM and the sink is also in the DOM, and the data flow never leaves the browser. For example, if source where malicious data is read, okay, now could be the URL of the page, document location, or it could be element of the HTML. And the sink is a sensitive method that call and causes the execution of the malicious data. Example document or write. So basically saying that DOM, where the malicious script or anything is stored, and sink, the method to call that, just to call that script in various way, like in the form of URL, just by clicking on the URL. So in this way the DOM based access works. Now what is difference between IDS and IPS? Okay, so this is the very common question. Every L1 SOC analyst जिनको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. So IDS is intrusion detection system and IPS is intrusion prevention system. दोनों एक तरह से काम कर, दोनों एक ही चीज़ है, बस फर्क होता है कि IDS आपके थ्रेट को डिटेक्ट करेगा बट उसको ब्लॉक नहीं करेगा. वो जस्ट अलार्म जनरेट करेगा एंड बाकी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर छोड़ देगा. व्हाट एक्शन दे वांट टू टेक दैट डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, बट इन आईपीएस अगर से कोई थ्रेट डिटेक्ट करता है तो दे इट विल टेक इमीडिएट एक्शन. दे विल ब्लॉक that threat depending on the response configured on that device. Okay, so the basic difference is IDS is just work in a detect mode. IPS works in a protect mode where it will actively block the threat, or IDS will not block the threat. It will only generate alarm, and it depends on the administrator whether what action they want to take. तो अगर 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 आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर, बिकॉज ये बहुत टाइम फॉल्स पॉजिटिव भी जनरेट करते हैं, अगर आप इसको आईपीएस मोड में इनेबल करो तो बहुत सारे लेजिटिमेट ट्रैफिक को भी वो ब्लॉक कर देगा. सो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेटवर्क ब्लॉकेज और एनीथिंग, सो यू कैन आईडीएस मोड में ही हम लोग ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं. अगर फॉर सेंसिटिव और क्रिटिकल नेटवर्क के लिए हम आईपीएस मोड में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम जहाँ पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स हमें
क्विकली चाहिए होगा, वहाँ पे हम आईपीएस मोड में इसे यूज़ करेंगे। ओके, तो बेसिक डिफरेंस, आईडीज बस डिटेक्ट करके छोड़ देगा, अलार्म जनरेट कर देगा कि यस ये अटैक, ये थ्रेट डिटेक्ट हुआ है, बाकी एक्शन आपको क्या लेना है आप लो। आईपीएस क्या करेगा, जब भी थ्रेट डिटेक्ट होगा उसे उस टाइम में ब्लॉक करेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेगा वो। ओके, नाउ हाउ वुड वी harden यूजर ऑथेंटिकेशन? यूजर ऑथेंटिकेशन को कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? ठीक है, देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन harden यूजर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि पासवर्ड पॉलिसी लगा के, देयर आर मल्टीपल पासवर्ड पॉलिसी। अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो इट मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अपर अपर केस लोअर केस होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यू कैन सेट पासवर्ड लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, इस पासवर्ड का 8 डिजिट का मिनिमम 8 डिजिट होना चाहिए, लेंथ सेट कर सकते हैं। पासवर्ड एवरी मंथ एक्सपायर, एवरी 3 मंथ और 45 डेज एक्सपायर होगा। पासवर्ड कैन नॉट सेट ऑन कंटेंस योर नेम, योर एम्प्लॉय आईडी। इस तरह के इस तरह के रूल्स लगा सकते हैं कि हमारा पासवर्ड कितना कॉम्प्लेक्स हो, कैसा हो। ठीक है, नाउ वी कैन यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर किसी ने पासवर्ड क्रैक कर लिया, अगर पासवर्ड पता चल गया, तब भी जाके वो आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए, बिकॉज देयर इज अनदर authentication is left, that is two factor authentication like OTP, or you can say another passcode. So such kind of things we can do. So in this way we can harden our user authentication. Now what is data leakage, and what are the factors that can cause data leakage? Okay, so this is also important question. What is data leakage? So unauthorized way of transferring data from your organization to outside. Okay, that is called data leakage. Okay, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, कॉन्फिडेंशियल डेटा को कंपनी से बाहर भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेटा लीकेज। ओके, और जहाँ पे फोटो क्लिक करना मना है, वहाँ पे आप फोटो क्लिक कर रहे हो, डेटा सेंटर में हो, आप फोटो क्लिक कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो अदर काइंड ऑफ डेटा लीक, और बाहर सेंड कर रहे हो। एंड यू आर टेकिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी, वो भी एक तरह से डेटा लीकेज है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन कॉज डेटा लीकेज? क्या क्या फैक्टर्स है जो डेटा लीकेज कर सकते हैं? सो देयर आर मेनी फैक्टर्स लाइक ह्यूमन एरर, इसकी वजह से डेटा लीकेज हो सकता है। टेक्नोलॉजी मिसहैप, सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम ब्रिज फ्रॉम हैकर, होम ग्रोन एप्लीकेशन डेवलप्ड टू इंटरफेस टू द पब्लिक। ओके, inadequate security control over shared document or drives, corrupt hard drives, backup are stored in an insecure place. So these are the cause of data leakage. Okay. Now the 18th question is, what are the personal traits consider protecting data? आप क्या क्या चीज़ें पर्सनली कर सकते हो टू प्रोटेक्ट डेटा? पहले तो इंस्टॉल एंटीवायरस ऑन योर सिस्टम, ensure that your operating system receive automatic updates by downloading latest security updates and cover vulnerabilities. Okay, and share do not share password with anyone, encrypt any personal data held in any electronic device, also so that if your device is stolen, किसी को चोरी कर लेता है, तो आपको आपके जो डिवाइस के अंदर जो सेंसिटिव डेटा है उसे वो रीड ना कर पाए। Before disposing of old computer, remove saved personal information to a secure drive, install anti-spyware tool. So these are the things that we can do for data
for data protection. Okay, we can take regular backup, but storing backup in a secure place. तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके सिस्टम का एंटीवायरस अप टू डेट होना चाहिए। अ, उस उसका सिग्नेचर अपडेट होना चाहिए, ताकि कोई कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर ना आ जाए आपके सिस्टम में। दे कैन मालवेयर आपके सिस्टम से सेंसिटिव डेटा लेके एक्सफिल्ट्रेट कर सकता है, बाहर भेज सकता है। ओके, इनक्रिप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके सिस्टम पे। अगर सिस्टम को अप टू डेट रखो विथ लेटेस्ट पैच, कोई वल्नरेबिलिटी ना हो। ठीक है, वो होना चाहिए। डेटा को इनक्रिप्ट करके रखो सो दैट नो अदर पर्सन कैन रीड, और ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड। ओके, also take regular backup. Now the 19th question is, what is steganography? Okay, so this is the process, or we can say this is the method where hiding a message within image, audio, video files used an alternate way to encryption. Okay, it is the alternate way of encryption. It keeps the advantage of unused bits with the file structure or bits that are mostly undetected if altered. A steganography message writes secretly to its destination, unlike encrypted message, which although unpredictable without decryption key and cannot be identified easily and can be considered as encrypted. ओके, सो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई डेटा भेजना है तो आप उसको एक फाइल में, इमेज में, या किसी ऑडियो में, या किसी वीडियो के अंदर आप उस फाइल को छिपा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड करके आप भेज सकते हैं। बिकॉज जो भी फाइल्स होता है, इमेज होता है, ऑडियो वीडियो होता है, उसमें बहुत सारे बिट्स होते हैं, अनयूज्ड होते हैं। सो जो एम्प्टी अनयूज्ड बिट्स है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है और सेंड करते हैं। तो रिसीवर या किसी को भी वो जो इमेज मिलेगा, वो ऊपर से देखने में तो लगेगा कि कोई ये पिक्चर है, या फिर कोई ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है। सो कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उसे कि इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेगनोग्राफी, जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन को किसी पिक्चर में, ऑडियो में या वीडियो में इंसर्ट करके भेज सकते हैं। सो इट इज अल्टरनेट वे ऑफ एनक्रिप्शन। इट्स ओके, what is phishing and how it can be prevented? Okay, so our the next question is, what is phishing and how it can be prevented? So phishing, so uh, इसको कैसे, so sorry guys, so our next question is, what is phishing and how it can be prevented? So phishing is a kind of social engineering, okay, in which attacker try to trick user to obtain some important information. ओके, ये एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें अटैकर यूजर के इमोशंस के साथ, they try to play with the user's emotions, they try to trick with different methods, like they call you, they send you some email, they show you some urgency. Yes, your account will be blocked in one day, you have to reset your password. They will send you a link in an email, you need to click on it and you have to reset the password. And they they represent themselves that he is from your organization, he is from he is your manager, he is your CEO, something like that, something higher management. And they will ask you some information, send that information immediately. So such kind of trick of used by the attacker to impersonate. ओके, सो फिशिंग इज अ काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें आप बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके यूजर को यूजर को जस्ट डिसीट यूजर
to obtain data, sensitive data और important data, like एक फेक वेबसाइट बना के आपको ईमेल में सेंड कर देंगे URL. Whenever you click on that URL, it will take you some false website where they will ask you to reset password, and that password will be captured by the attacker. They will impersonate banking website, एक नकली बैंक का वेबसाइट का पेज आपको बना के भेज देंगे और कहेंगे कि ये आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा, change your credentials, so such kind of things they do. Okay, so so this is nothing but it's a social engineering. They will send you some spam mails, marketing mails, that click on this link or something, subscribe this ad. They will show you unwanted ads. And also the social engineering tries to impersonate genuine web page like Yahoo, Facebook, and will ask you the user to enter their password and account ID. Okay, कभी जीमेल का फेक पेज बना के वो आपको ईमेल कर देंगे और कहेंगे कि रीसेट योर पासवर्ड. आपको लगेगा कि ये जेन्युइन जीमेल का पेज खुला हुआ है. जैसे यहाँ पासवर्ड डालेंगे, दैट पासवर्ड विल बी कैप्चर्ड बाय द अटैकर. सो दिस इज कॉल्ड फिशिंग. ऑल्सो वो कुछ अटैचमेंट भेजेंगे, पेमेंट रिसीव्ड इन मेल भेजेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपने पेमेंट रिसीव्ड, और दिस इज इनवॉइस, योर सैलरी स्लिप, सब ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट वो सेंड करेंगे. बट वो डॉक्यूमेंट मलिशियस होगा, जिसके अंदर मे बी दैट कंटेन सम वायरस, मालवेयर, एम्बेडेड मालवेयर. so so such kind of things comes under the phishing. How it can be prevented? So it can be prevented in many ways. Having a guard against spam. So every organization use some email security which guards any spam mails. Do not allow any spam mails to enter the organization to reach end user. तो ईमेल सिक्योरिटी क्या करता है कि हर एक इनकमिंग जो भी ईमेल्स आ रहे हैं वो सबको एनालाइज करेगा, उसके उसमें जो भी एम्बेडेड यूआरएल्स होता है वो उसे एनालाइज करेगा, और जो भी एम्बेडेड अटैचमेंट में फाइल्स होगा उसे एनालाइज करेगा. अगर उसे सेफ, आफ्टर एनालिसिस उसे सेफ लगता है तो अलाउ करेगा. इफ टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पहले अलाउ कर देगा, बट आफ्टर दैट दे विल जनरेट अलार्म. सो एक ईमेल गार्ड होना चाहिए. अगर स्पैम मेल से स्पैम कैंपेन चल रहा है तो उसे ब्लॉक करेगा. कम्युनिकेटिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू सिक्योर वेबसाइट. ओके, जब भी आप किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक बैंकिंग, अगर बैंकिंग वेबसाइट पे आप कुछ कर रहे हो, आप नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र करना हो, तो पहले आप वेबसाइट के HTTPS वाले कॉलन को ज़रूर देखेंगे. अगर HTTPS है या HTTP है, अगर अनसिक्योर है तो कभी यूज़ मत करिए, अदरवाइज योर क्रेडेंशियल विल बी कैप्चर्ड. ऑलवेज यूज HTTPS वेबसाइट. ओके, download files or attachment in the emails from unknown senders. Never download files or never click on the URL from the email coming in the email coming from the unknown person. Be aware of links in email that ask for personal information. Okay, so ignore entering personal information in a pop-up screen. So in this way we can prevent phishing attack. Okay, now here we studied phishing. Now the 21st question is, what is spear phishing? Okay, so the phishing is not a much targeted, where attackers send email spam mails to large number of recipient, you know. So वो उसे लग अटैकर ये सोच के भेजता है कि वो 1,000 लोगों को ईमेल भेज दिया है, 1,000 में से एक दो तो कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई उसके यूआरएल पर क्लिक करेगा, अटैचमेंट क्लिक करेगा, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मांगा है उसे वो रिप्लाई बैक करेगा. सो फिशिंग होता है नॉट ए वेरी टारगेटेड, वो लार्ज यूज़र के लिए, लार्ज रेसिपिएंट के लिए होता है. ठीक है,
बट स्फीयर फिशिंग होता है वेरी टारगेटेड अटैक। ओके, टारगेटेड फिशिंग मतलब किसी पर्टिकुलर यूजर को ही वो मेल्स भेजेगा, जैसे कि किसी कंपनी के हायर मैनेजमेंट लाइक सीईओ, सीएफओ, सीआईओ, ओके, सब सीनियर मैनेजमेंट को अटैकर टारगेट करेंगे और मेल सिर्फ उन्हीं को भेजेंगे, मीन्स टारगेटेड फिशिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टारगेटेड फिशिंग। ओके, they will not send in a bulk. Sphere means they are targeted. Okay, so वो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के बारे में, they gather the email address of top level management employee. Okay, and now they will send some malicious email or uh, to only few people or one people. Okay, so this is very targeted fear phishing. Now what is smishing? So smishing is a phishing over message. Okay, तो आप लोगों को कभी कभी अपना मैसेज आता होगा कि यू ओन 5 लाख ऑफ प्राइज मनी, यू हैव टू रजिस्टर ऑन दिस वेबसाइट, okay, you have to pay 2000 rupees for registration. So such kind of message you might have received, आपको मिला होगा, जो स्मिशिंग के अंदर आते हैं, जो आपको मैसेज करते हैं अटैकर या जो भी हो गया, आप जिसमें मैसेज आएगा जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, जो मैसेज करके वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ व्हाट इज विशिंग? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिशिंग अटैक ओवर फोन। ओके, आपको फोन आएगा कि यस आई एम कॉलिंग फ्रॉम this bank, this hospital, I need your information, I need this your credit card number, I need bank ATM pin. So they will call you directly. This is also a kind of phishing but over call. Okay, तो जिसमें आपको अटैकर कॉल करके ये इंफॉर्मेशन आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड विशिंग। एंड इन स्मिशिंग they will send you message on mobile phones. In wishing they will call you directly. Okay, so we have discussed all these questions. Now in next video we will discuss some more questions. So see you in the next video. Bye bye.